नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है बहुत ही थ्रिलिंग कास्ट ऑफ ब्रीथ इनटू द शैडोज। हाय गाइस, वेलकम। थैंक यू। अभी मैंने थ्रिलिंग बोला, थोड़ा मुझे जोश चाहिए इंटरव्यू में। मुझे पता है हम सबने खाना खाया है और थोड़ा डल मतलब तो क्या आप बताइए क्या चाहती हैं? पुशअप मारे? अरे आई वुड लव दैट। नवीन 500 पुशअप नॉन स्टॉप वो मार लेट वर्कआउट के हो आए चुका थे है तो मेरा। उनसे पुशअप करा सकते हैं। हाँ, वो लेट के मारेंगे पुशअप। ये लेट आए थे, ये लेट के करेंगे। चलिए आइए। नहीं मैं कहाँ लेटा हूँ। सॉरी, ठीक है। ठीक था, ये इतना काफी था। हाँ, चलो। चलेगा। So I want to begin by saying this. The trailer is जो last time जो सीजन था उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतर। मतलब इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी एक्साइटिंग। लाइक मज़ा आता है देखने में, वो बार बार देखने को भी मन करता है। मुझे आप सबसे जानना है, व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ शूटिंग दिस सीजन एंड सबसे नर्व रेकिंग चीज़ जो हुआ है ड्यूरिंग दिस सीजन वाइल शूटिंग। तो आप लोग में से मुझे लगता है आप ये जो सवाल है सबसे पहले आप हमारे जो डायरेक्टर है। हाँ, मुझे पता था यही है। आप उनसे पूछिए क्योंकि he is the creator of the show as Correct. well. So I think I'd be interested as actors to understand which season he preferred and why. And what is thrilling? Interesting. Yeah. So yeah, which season you prefer? That's a tricky one. That I think we can skip. But yes, मैं वो जरूर बोलूँगा कि हर दिन हर मोमेंट, this is what I had always worked towards. कि जब हमने 1.25 साल इस स्क्रिप्ट को लिखा और उसको दिन रात, through the period of lockdown, this is what we were doing every day, just writing and rewriting and rewriting. Well, that's, according to me, is what actually called writing. So, and to see that translating every day on the set, with the help of these amazing actors and my crew, और वो moments को alive अपने सामने देख और वो माहौल को create करना, वो intensity को, वो thrill moments को, with the help of lighting, with the help of performances, the set designs. So हर वो दिन, हर वो moment मैं कहूँगा बहुत ही demanding था और बहुत ही fulfilling था of this season. The rest of the cast? We agree with Mayank. But how nerve-wracking was this season, especially because ये again आप सब आपके सब जो आपके characters हैं evolve हो चुके लास्ट टाइम से, और everyone has a different graph in this season. जितना मैंने notice किया है ट्रेलर से, मुझे आप सबसे जानना आपके experiences कैसे थे? Nerve-wracking मैम तो नहीं कहूँगा क्योंकि शायद अगर आप मयंक और अमित की बात करें तो this is their third installment. Yeah. Right. This is Sayami and mine second and Naveen's first. But Naveen तो एक दिग्गज कलाकार है in this इस क्षेत्र में, अगर आप देखें हर क्षेत्र तो वो भी है। तो I don't think it was nerve-wracking क्योंकि I think everybody to a certain extent आदत सी पड़ गई है कि माहौल कुछ ऐसा है, characters ऐसे हैं। So I think there's nothing nerve-wracking. Challenge ये है कि इस बार हम audiences को engage कैसे रखें। So what can you do slightly differently or whatever? तो nerve wracking की बात तो नहीं होगी क्योंकि also in a thriller genre, luckily or unluckily हम सब जानते कि होने क्या वाला है. So there's nothing nerve wracking in that sense. The challenge is, can you still keep them interested? Correct. For just 480 minutes. Yeah, just not a big deal. Yeah, I agree with what AB is saying also, but you have to understand, I think our experience as actors is different. As a maker, of course, I think because a maker sees a 360 of a product, and especially if the content is something as tricky and twisted like Breathe. Yeah. So, of course, I'm sure his experience would be more nerving because he has to see the end result. And like Abhishek said, the main thing is the challenge for us as actors, as creators, as artists. But I think what makes the whole experience soothing is कि हम लोग एक बहुत strong team है. We all believe in each other. We all support each other, and that makes the process of working together fun. Right. Yeah. Although it is difficult. Correct. Yeah. Now, AB, you just mentioned, कि वो वापस वो कैरेक्टर करना कभी-कभी वो हो जाता है
ईज हो जाता है बिकॉज यू हैव डन इट, इट्स ईजी. बट ऐसा कभी टाइम आया है आपके इसमें एटलीस्ट ड्यूरिंग शूटिंग ब्रीथ कि वो कैरेक्टर घर छोड़ के वापस वो कैरेक्टर में ढलना आपको डिफिकल्ट लगा है कि आप वो कैरेक्टर घर लेके गए हैं? मैं ज़्यादा एक्टर्स को जानता नहीं हूँ जो अपना काम है वो घर ले जाएं. Part of the function of being an actor is you have to know when to switch off. और अगर उस काम में आपको दिक्कत होती है then Mumbai traffic really helps. कहीं ना कहीं रास्ते में छूट जाएगा. हाँ, correct. घर तक पहुंचेगा नहीं कैरेक्टर. So ज़्यादा मुश्किल me personally I don't know. अच्छी बात यह है कि वो जो किरदार है आप उसे जान चुके हो in season 1 of Breathe Into the Shadows. तो अभी season 2 में जब उसको फिर से करना हो there's certain aspects of them you know. इस बार आपकी concentration इस बात पे होती है कि अभी इसमें अलग क्या कर सकते हैं. ज़्यादा भी नहीं कर सकते because जो किरदार के दायरे हैं you have to stay within that. लेकिन I think we are very lucky क्योंकि जैसे मयंक ने कहा कि 2 साल तक वो लिखते रहे. तो जब आपका मटेरियल जो है इतना फर्म है, इट्स मेक्स योर जॉब अ लॉट इजियर. सो आई नेवर रियली हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. नवीन, दिस इज योर फर्स्ट टाइम आप ये एक्साइटिंग टीम के साथ जुड़े हैं. आपने जो पहला सीजन देखा था, मतलब आपने कुछ प्रिपेयर किया था पहला सीजन देखने के बाद और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो? मयंक के साथ ही मैं बैठता था और हम लोग स्क्रिप्ट पे डिस्कस करते थे. तो क्या? हमारे साथ तो नहीं हुआ. एक सेकंड. हाँ, व्हाट इज दिस मैन? ये इनके ऐसे उन्होंने कहा बाद में कार्ड देना अवेलेबल नहीं हूं, मैं तो सबके साथ इनके बैठना कुछ चाहता सेलेक्ट एक्टर्स होते हैं. अच्छा, favorites होते हैं. नहीं, आपने मुझे देखा लगा था इनके कि ना reading इनके सबकी कुछ होगी, फिक्स्ड but आप लोग फेवरेट थे ही एक्टर्स नहीं. होते हैं, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट होती है. नवीन मुझे तो favorite actor शूटिंग के दौरान पता चलता था कि अभी क्या करना है. मेरे को तो टाइम ही नहीं दिया. मैं जब फोन करता मैं चेन्नई में हूं. अरे मुझे पहले बोला गया था कि लास्ट सीजन में सब बैठे थे, रीडिंग हुई थी. कहाँ? अरे मेकिंग में भी है वो. अरे बाबा, वो मेकिंग के लिए ही है. रीडिंग हुई नहीं थी. नहीं, हम लोग को किसी 5 स्टार होटल में ले गए थे, खाना वाना खिलाएंगे, सब लोग को बैठाया गया. 5 मिनट किसी ने कुछ पढ़ा, फिर चलो उठो, हो गया. पता चला बाद में और रीडिंग कुछ फर्स्ट एपिसोड भी रीड नहीं हुआ था उसमें. ओके. नहीं, मैं तो सारे आजकल जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, एवरीथिंग इज डन टू लॉक कि हम लोगों ने ये किया है. एक्चुअली किया है तो किसी को पता नहीं है. तब ये पता चल गया कि ये इनकी नहीं, मैं लगभग आई थिंक लास्ट 2 एपिसोड के सीन्स शायद नहीं पढ़े थे हमने, बट उसके अलावा हमने सारे सीन्स एक बार पढ़े थे. तो मयंक के साथ ही बैठा था मैं और वही मेरी प्रिपरेशन थी. बाकी 1-2 लोगों से उन्होंने मेरी और मीटिंग भी कराई थी. मैं सर हमें तो नहीं दिया. आप लोग तो दिग्गज कलाकार हो यार. मैं तो नया खिलाड़ी हूं. जबकि मैं बताता था कि वी आर लाइक फैमिली, हम इतना हंसते खेलते. यस, काम बहुत सीरियस है. आप देख रहे हैं इनटू द शैडोज में बहुत कुछ होता है. बिल्कुल. बट आई डोंट नो what he was thinking. मैं So वैसे he was भी, quite I was He's scared. He मैं was. पहली बार आप लोगों के साथ He was. काम करने वाला था, तो मैं वैसे भी एक्स्ट्रा नर्वस भी था. सो मैं चाहता था कि एक एक्स्ट्रा बार एफर्ट. मैंने तो कभी नर्वस नहीं देखा. मतलब ऐसे सेट्स पे भी ऐसे करते थे ये आपको ऐसे और नर्वस करते थे? नहीं, सेट पे तो Deliberately नहीं नहीं देते थे. He has a fan following that follows him everywhere. Outside his trailer, there was a group of women screaming. I wish this was true. Naveen. All wish this this was true. we couldn't in Delhi we couldn't shoot because ये है दिल्ली का छोरा. तो गलती से हम लोग लाजपत नगर चले गए थे. वहाँ उसके जब रिश्तेदार और सब पड़ोस के लोग आ गए थे. Outside his trailer, all his groupies were there. You come to Mumbai, then all his TVF groupies are there. You go anywhere else, you can't go anywhere with him. And I've worked with some of the biggest superstars on the planet. And then I've worked with them. Yeah, that's the scene. She's admitting it as well. The modesty, I tell you. You want to say something else? No, हाँ, preparation तो बस यही थी, I think. I sat with Mayank, like we discussed scenes together. Yeah, और इन्होंने actually मेरी ये आएगा कब? ये रिलीज के बाद आएगा क्या? तुम खुल के बोलो, डरो मत. हाँ, तो तुम खुल के बोलो. मतलब हाँ, हर चीज सोच समझ के. नहीं, अच्छा, बस अगर ये रिलीज के पहले आएगा तो मैं ऐसे मैं बात ये करूंगा. बोलता बाद में नहीं, आएगा मैं बताऊं, मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं मैं एक्टिंग कहीं शो करूंगा. के बारे में ज्यादा ना बता दूं. नहीं, तुम बताओ. तुम्हें पता है ज्यादा. नहीं तो तुम्हें रीडिंग भी मिली थी. हम लोगों को पता भी नहीं था. I didn't get the script also this time. वो मैं पूछता भी था मयंक से. मैंने कहा बाकी एक्टर्स ने स्क्रिप्ट पढ़ी भी है? नहीं, बाकी एक्टर्स तो है ही नहीं. बाकी ना एक्टर्स वो तो मयंक बाकी एक्टर्स को स्क्रिप्ट मिली ही नहीं. सुनो, no, what? we've been talking about. Bro, मैं Talking, no.
talking On Zoom about call. no 1 second. Pandemic Pick में your कोई words कुछ wisely, लड़ाई Sharma ji के लड़ाई हो गई, बेटे. जब- Talking about and discussing a scene are two separate things. And reading the scenes. 1.5 साल से आप जब हिमाचल के किसी टेंट में बैठे हुए थे, नहीं, सर मैं जोधपुर, लिख रहा हूँ जयपुर कहीं। बात करते हैं, अच्छा ये करेंगे, शूटिंग ऐसे करेंगे, then to discuss scene क्या, we didn't know. So the idea was all was the done way by we Betiyaan. Yeah, gonna also because my surprise character the was new, audiences this आपने time. तो खुद ही का That's क्या surprising बोला? us. Surprise. Surprise The the cast cast, as the well, cast. He was right? also more confident Did with you know the the story of the season? story of this season. Yeah. Not entirely. I still do not know the end of the season. Yeah, no, that I he was doesn't asking tell him कि anyone. C16 वो तो क्या है? मैं किसी को बताते नहीं. वो लास्ट पेज स्क्रिप्ट में कहीं तो हाँ last मैंने day उससे test खुद पूछता हूँ C16 क्या No, है? no, even then edit Yeah. में क्या होने वाला है कोई, he doesn't tell anyone. I don't think even Vikram knows what the end of the season. He's behaving like Christopher Nolan these days. वो नहीं बताते ना, See, पता नहीं. Mayank's kept What the they privacy, yeah. Watch Breathe into the Shadows season 2 on 9th of November. Everyone is going to Amazon watch it Only on together. Prime. But Naveen, trailer से तो ऐसा लग रहा है आपकी shades, again you have a lot of shades in the series. Light blue, dark blue, black, white, Anything about that you yellow. yellow. आपको उसके बारे में हाँ कुछ बताना है? शेड्स तो हैं, वो जो उन्होंने लिखा है वो आई थिंक वही दिख रहा है. सो आई थिंक विक्टर में ऐसा तो है थोड़ा सा, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो उसमें अलग अलग हैं. आई एम लकी कि मुझे आई गॉट द चांस टू प्ले विक्टर. Now he's really nervous. तो वो बहुत सोच सच के बोल रहे हैं. नहीं नहीं नर्वस कुछ नहीं. ये nervous नहीं दिस इज होता व्हाट है। आई मीन. अच्छा. हाँ यही मतलब शेड्स हैं, अभी शेड्स तो हैं. All right. Coming to the lady, how was your experience in this season, and how evolved has your character been in this season? So the most nerve-wracking part of the thing was those 1.5 years जब मयंक कहीं जोधपुर, जयपुर कहीं गए थे. For this season Himachal. हिमाचल. वहाँ पर he was writing and like they both of them discussed that she used to call saying, oh this is going to happen, that is going to happen. So it all sounded very exciting. It was about when we are going to start because of the uncertainty that we were living in. Right. No, and then the worst thing is if you didn't call for 2 weeks, you thought he's हाँ, dropped the yeah, idea yeah. of having been there. 2 हफ्ता तो फोन ने यहाँ माने कि हाँ he's written me out of the script. Because the thing is, you ended the last season with C16 and this whole mystery behind Yeah. C16. So it was left with what is C16, which is a big mystery which we will be, understanding this season. And we as the cast didn't know it till the day we shot. Now let me be fair, I know it, but the rest of them don't. I know. Oh, you do? Mayank said you don't I've been know. here for 6 years, don't forget. Yeah, so for me it was like Naveen's character has different shades, different layers. This time we kind of saw my personal side as well, my journey with Jay that continues or doesn't, we'll get to know. अच्छा मैं आप सबको बता दूं, अभी तक मैं नहीं जानता हूँ कि वही C16 तो। क्या है. हाँ? Yeah, I still don't. Why so? He doesn't tell me. I've tried strong arming him. I've tried blackmailing him. I've tried It's not everything. work. उसका I've season even got his daughter to ask him from me. He's not. उस पे एक अलग season बनेगा. Season 4 is all about. Really? That's तो why announce it's हो the चुका है, Russo मतलब brothers season and 4 भी Mayank है. are like this. Same. Like in the Avengers, they No, didn't know that what they were doing, when they're going to come. He's like that. I still don't No, know. we know what she's. We know, you know. No, you know. We absolutely. don't know. Yeah, but that was deliberately You know. put into action because the kind I of also know, I'm just lying. the love and this intrigue we got from the audiences from the last Right. season. So yeah, It's a joke. I always had the scene, the idea, how to bring in कैसे that पता Yeah, that was C16 my element. question. Yeah. Did you always had मतलब आपके Absolutely. दिमाग में पहले से था कि ये कैरेक्टर्स को जी। ऐसे डेवलप करेंगे, ये स्टोरी दो को ऐसे सीजन डेवलप यही करेंगे? मैं बिल्कुल this I want to address that ये कोई आफ्टर थॉट नहीं है into the shadow season 2 का. We as a team were always aware. Unfortunately because of the COVID times थोड़ा delay हो गया. Correct. But kind of where we are heading वो हमें पता था. Screenplay, yes, I had because I write with my team. So once I got done with the post work of season 1, that's when we started writing. Okay. But we all were discussing about it, and hence it was always conceptualized as 2 seasons. Okay. And that's why lot of character traits, lot of motives, lot of treatment, the narrative, we had played like that. Ki season 1 and hence probably once you're going to watch this season, that's why you'll feel that the evolvement, the growth, because we already knew where we are heading. Right. And these are the notes which we'll touch in the last season, and this is where we take it ahead from. So will we see a season 4 as well? That once you see the last episode of एक मैं this सवाल season, पूछना चाहता हूँ इनसे. Please. एक
भैया एक समस्या है, वो आप प्लीज उसको ठीक कर दीजिए। ये सीजन 2 है कि सीजन 3 है? ये हाँ, ये सीजन बहुत कंफ्यूजन हो बिल्कुल ये ब्रीथ इनटू द शैडोज का सीजन 2 है। और ब्रीथ का 3 so बुलाएं क्या इसको? सीजन 2 सीजन 2 of ऑफ Breathe ब्रीथ into इनटू the Shadows. समझ So, चलिए। इसका सीजन 3 होगा। हाँ मैं correct ये करती हूँ अपने आप को बिल्कुल भी आपने फिर। बिल्कुल देखिए हम तो गए फंस गया बस इस सवाल का जवाब इस सवाल का जब ये सवाल पूछा था पिछले साल की अगले से देखिए सर अभी क्या है देन सब फंस गए Long एक और pause. साल के लिए। So yeah, there are few elements, you know, which I feel it will be great if you'll watch the show and discover it. Maybe but I really need to ask you this question. जी। आपके कैरेक्टर को लेके आपका जो रोल था ब्रीथ पहले सीजन पे लोगों को बहुत पसंद आया एंड देयर वाज certain number of people who were saying कि you should continue doing such characters because they enjoy seeing you in these these roles, not typical, sorry, but these roles. आपको क्या लगता है ऑडियंसेस जो बोल रही है, आपको एज एन एक्टर वैसा लगता है कि यू आर वेरी गुड एट डूइंग दीज शेड्स वाला roles? फर्स्टली आपने कहा कि they really liked me in the role, so that means I've done a bad job because you're not meant to like Jay. No, but No, but way then you- what she I think meant was that way people you like to see you portray. perform. Such Yeah. oh okay oh as a well thank performer, you as an actor, they love seeing देखिए you एज doing But you एक्टर do के such तौर roles पे can हम be ये convincing. तय नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ये हमारे जो ऑडियंसेस हैं, हमारे जो दर्शक हैं और हमारे जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स हैं, ये तय करेंगे कि एक्टर क्या काम करने वाला है। हम भले चाहें कि हम कुछ कॉमेडी करें या एक्शन करें, अंत में जो काम हमें ऑफर किया जाएगा वही कर पाएंगे हम लोग। That is the only choice we have from what you're offered. अगर लोगों को हमारा काम अच्छा लगे, thank you very much. That's why we work. And hopefully, if they like your work, you'll get your next job. Feels good. अगर लोग आपका जो काम है उसका सराहना करें तो अच्छा तो लगेगा ही. But I think in my experience, मैंने ये सीखा है कि don't get too carried away by it. क्योंकि at the end of the day you have to realize, especially as an actor, in film or now digital, that you are the sum of a lot of parts. There's an army of people that are responsible for putting you up where you are. Correct. Starting with the director, हमारे जो लेखक हैं, निर्माता हैं, DOP, sound recorders, light men, grips, costumers, makeup artists, valets, spot boys, drivers, इतने सारे लोग हैं जो selflessly काम करते हैं so that you can do a better job. So you realize that when somebody says something like that, I feel good because you're praising an entire team that has done well. Because I know I'm not an island. सिर्फ मैं ये नहीं सोच सकती मैंने अच्छा काम किया। आपने अच्छा काम इसलिए किया है क्योंकि डायरेक्टर ने आपको अच्छे से डायरेक्ट किया, राइटर्स ने आपको अच्छे लाइंस दिए हैं, DOP ने आपको ठीक से लाइट किया, the audiographer has recorded your sound correctly. So there's so many people involved. So it feels nice. So I like it because you're praising the team. But as an actor, आपका ऐसा भी कोई होगा कि कोई फेवरेट कैरेक्टर जो आपको ऐसा प्ले करने में मजा आता है, जॉनर जो आपको करने में बहुत मजा आता है? I think that's transitionary. Okay. Depends what your frame of mind is. हाल ही में I really want to do something light. क्योंकि अभी कुछ 4 साल से मैं ये breathe it's very intense and it's very difficult. It taxes you. So what I'd like to do next is that I would love to be able to do something light. Like a comedy. Yeah, like a comedy. But again, it's not in my hands. I hope through me saying this, it manifests in some way and somebody's listening to it. But I'm prepped for that. I'm like I said earlier in the interview, I think I've overstayed my welcome in this dark, thriller, intense space. Yeah. All right. Well, on that note, I'm running out of time, but lovely talking to you all. I'm Thank you. really looking forward to this. मैं Thank you. ट्रेलर देखने के बाद सच्ची ऐसा मन कर रहा था कि अभी दिखा दे तो अच्छा रहेगा, तो और we could have spoken a चलिए lot अभी more. दिखा देते हैं। चलिए साथ में देखते हैं। नवीन के आपने पास एंडिंग तो तो देखी पेन नहीं, ड्राइव है, साथ में देखेंगे। सारे एपिसोड पढ़े हैं इनके वो पास। लिंक इनके पास होगी। आपने एंडिंग नहीं देखी है तो मजा आ जाएगा और साथ में देखेंगे। मैंने तो बिगनिंग भी नहीं देखा। ये कुछ दिखाते नहीं है। तो प्लीज आप समझ गए हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, Thank you. थैंक्स Thank लवली you. टॉकिंग टू Thank यू you. ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you.